ठीक अछि कतका टाइम किछि देखिथिले लास्ट को टॉपिक थिला कोटा लास्ट कवर हेतिला सर ए सब एडा हेई सारला सर एडा सो हेतिला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हे जेतिला लाइफ मिशन भी हे जेतिला ना एटा हबो बोधे ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट हां सर एटा Yes, sir. एटू स्टार्ट ठीक अछि तो देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट कौन रिसेंटली जो कॉप 27 रे ए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट इंडिया अपोज करथिला ओके तो एटा कौन गोटे टाइप कार्बन टैक्स कि इंट्रोड्यूस करा को चाहूची this plan was put forth by your European Union तो यूरोपियन यूनियन कहूची गोटे कार्बन टैक्स गोटे इंपोज करिवो जार माने टोटल ओवरऑल आइडिया होची हमें ता कहूची कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट माने गोटे नॉन ईयू सप्लायर अछि ईयू रे माने यूरोपियन यूनियन रे जो भी इंडस्ट्रीज अछि से मानो गोटे सेट ऑफ यू कैन से स्टैंडर्ड्स अछि कार्बन एमिशन रिलेटेड जदि सपोज यूरोपियन यूनियन रे तांकर गोटे कार्बन माने स्टैंडर्ड अछि कि पॉल्यूशंस लेवल एति परिबनी बा जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होची ताडा डिस्पोजल गोटे प्रॉपर प्लेस प्रोसेस रे हबो तो सेटा होची यूरोपियन माने नॉर्म्स सपोज इंडियन गोटे प्रोड्यूसर अछि बर्तन सी किछि प्रोडक्शंस करछि तो इंडिया रो जो भी कार्बन नॉर्म्स अछि ऑब्वियसली इट इज लेस देन यूरोपियन नॉर्म्स बिकॉज़ वी आर ए डेवलपिंग कंट्री वी कांट इंपोज वेरी हाई नॉर्म्स इन आवर कंट्री ओके तो गोटे नॉन ईयू सप्लायर जदि यूरोप रे किछि सप्लाई करिया को चाहूछि then ता ऊपर किछि एक्स्ट्रा टैक्स पड़िबो जस्ट बिकॉज़ ही हैज नॉट मेट विथ द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन ओके यूरोपियन कार्बन स्टैंडर्ड्स मेट करिनी तो सेति में किछि एक्स्ट्रा टैक्स पकलो ताको हम कहू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट इंडिया अपोज करथला ऑब्वियसली तो एटा 20 जो कॉप 27 हम पढ़थिले समल से खेचबे सेति इंडिया को अपोज करथला ओके दैट्स यू शुड रिमेंबर तो एटा फर्स्ट टाइम पे 2021 रे ईयू देखि आसीथिला ओके 2026 रु से इंप्लीमेंट करिबो कहिछि माने किछि कार्बन मेजर सेक्टर्स अछि ता ऊपर मोस्टली इंपोज करिया पे एटा प्लान रखिछि यूरो तो प्रथमे हम देखिया कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन कार्बन बॉर्डर टैक्स जनरली कहा कहउछंती इट्स ए टैक्स ऑन द कार्बन एमिशन imposed on कहा ऊपर इंपोज करूछु जस्ट वन सेकंड imposed on imported goods okay from the countries that has less strict climate policies okay तो जो माने को लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी अछि सही कंट्रीज जो जे हमें किछ इंपोर्ट करछु देन एक्स्ट्रा टैक्स इज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन देम सो दैट इज कॉल्ड द कार्बन टैक्स कार्बन लीकेज कोन कार्बन लीकेज माने जदि माने दिस इज undermining of the global climate effect due to the relocation of production आर अर्थ कोन जितने भी हमें माने जितने भी हमें इनिशिएटिव्स नोचु ग्लोबल लेवल रे कार्बन एमिशंस को कम करिया पे सपोज पावन तो यूरोप अछि यूरोप रे किछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अछि कार्बन एमिशंस पे तो गोटे कंपनी अछि एक्स कंपनी तो व्हाट ही हैज डन टू अवॉइड हिज टैक्सेस जो भी कार्बन एमिशंस एते हाई स्टैंडर्ड्स हमें मेट न करिया पे ही हैज चेंज हिज नाउ डेस्टिनेशन सॉरी प्रोडक्शन यूनिट्स टू इंडिया लेट्स से इंडिया रो कार्बन एमिशंस पे एते स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नै तो नाउ so due to this effort but वर्तमान से जहां भी प्रोड्यूस करूची पुनी से डिफरेंट मेथड रे पुनी यूरो कंट्री को ही पुनी एक्सपोर्ट करूची again without meeting with the carbon standard he is continuing his production so this is called the carbon leakage this is undermining the global climate effects efforts due to the relocations of the production okay you should remember this सर प्लीज हां सर क्या देखो माने गोटे पर्टिकुलर कंपनी अछि से किछि कार्बन प्रोडक्ट माने किछि प्रोडक्शंस फलरे किछि कार्बन फुटप्रिंट एमिट करूछि कार्बन फुटप्रिंट अछि तार तो वर्तमान जदि ईयू टाइप जो माने हाई लेवल ऑफ तांकर स्टैंडर्ड्स रखितंती एवरी कंट्री एवरी प्रोडक्शंस यूनिट हैज टू मीट विथ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन एमिशन काहे के एटा सब ईयू करूछि देयर इज वन मोर पॉइंट वी हैव फॉरगॉट एटा कोन अछि ईयू रो टारगेट अछि बाय 2050 दे वांट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल ओके तो सेहिति पई करिया को हेले बाय 2030 सेमानं को 55% सेमानं को जो कार्बन एमिशन अछि 1990 रो लेवल रे 1990 लेवल रो माने 55% रिडक्शंस दे हैज टू अचीव बाय 2030 ओके एबे पर्यंत से माने केवल 24% अचीव करछन तो ए जो एक्स्ट्रा अचीव करिया पई से माने ए सब मेकैनिज्म्स नै कि आछन माने कोटे प्रोडक्शन यूनिट अछि जदि यूरे प्रोडक्शंस करि थांदा
देन ताको बहुत हाई स्टैंडर्ड मीट करिया पड़ता ताको पॉल्यूशंस को ट्रीटमेंट करिया पड़ता तार जो चिमनी रे मन इच्छा सब धुआं छाड़ दोची आई एम जस्ट गिविंग क्रूड एग्जांपल्स ताको डायरेक्टली छाड़ी परियोनी ताको ट्रीट कला पर छाड़िबो एक्सवाइजेड प्रोविजंस तो ता फळे ताको एक्स्ट्रा खर्च पड़ता तो सी कोन करूची वर्तमान यूरोप टू उठेला गोटे एशियन कंट्री बा अफ्रीकन कंट्री जोटे एते हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशंस नाही सेठी के तार प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट करला ताकि बर्तन जहां भी से प्रोडक्शन करियो पुणी एक्सपोर्ट करिवो ना यूरोपियन कंट्रीज नहीं से बिकिवो बट नाउ टू अवॉइड दैट कार्बन टैक्स और this to meet with the carbon standard he has changed or relocated his production unit okay but my सर तार पेरेंट कंपनी ता होची यूरोप रे हां माने एक्चुअली से यूरोप रे थिला वर्तमान से चेंज कर देला अन्य गोटे कंट्री को जोटी एते हाई स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन रेगुलेशन नाही ए तो Okay, तार जेहेतु मार्केट से यूरोप की थिला से एबे भी कंटिन्यू करे यूरोप रे ही बिकिबा एक्सपोर्ट प्रोसेस रे कोन फरक पड़छ ताकू तो से कंपनी की सर कोन कार्बन बॉर्डर टैक्स तो दବାକୁ पड़ियो ना सेही ପାଇଁ तो ए जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एटा किए कहूची एटा कोन कहूची एटा कहूची ईयू कहूची इंपोज करिया पे बट इंडिया ताको अपोज करची जे नाही एमती करो नाही बिकॉज आमे तो देखो एटा कार्बन लीकेज कांसेप्ट छाड़ी भी दियो बट इंडियन किछि कंपनीज तो अछंती सपोज एबे टाटा अछि लेट्स से किछि आयरन प्रोडक्शन करची जो आयरन स्टील्स गुडा को अपन यूरोप को एक्सपोर्ट करा होची बट यूरोपियन जो कार्बन एमिशन रो जो स्टैंडर्ड अछि इंडिया रो स्टैंडर्ड अछि ऑब्वियसली इक्वल नुह इंडिया स्टैंडर्ड टिके कम अछि बिकॉज आमे 2070 सुधा टारगेट रखिछु कार्बन न्यूट्रल होवा पे तो इंडियन कंपनी जदी एक्सपोर्ट करिवो सपोज 1000 रुपीस रे सेल करथला वर्तमान एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स पड़े 1200 हे जिवो बा समथिंग लाइक दैट किछि ताको प्राइस पड़ जिवो तो इंडियन कंपनीज रो जो प्रोडक्टिव सॉरी जो कॉम्पिटिटिवनेस अछि इट इज गोइंग टू रिड्यूस तो तार इंपैक्ट काहा पे पड़ियो इंडिया पे पड़ियो सो सेति पे इंडिया अपोज करछि जे ए टाइप रो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वगैरह लगेवा ठीक नुह एटलीस्ट ए जो टाइप रो प्रोडक्शन माने जो कंट्रीज गुडा क्वेश्चन से मानको ऊपर गेटिंग माय पॉइंट सर टिके आउ थरे कोन तो बुझियो न सर बुझी होनी देखो टिके आउ तो सर कोन यूरोप कहूची यूरोप रु बाहरे जे कोनोसी कंट्रीज अछंती जदि से माने यूरोप को किछि एक्सपोर्ट करिवे देन से मानको ऊपर गोटे एक्स्ट्रा टैक्स पड़िबो जोटा गोटे कार्बन टैक्स बा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ठीक अछि तो काहे की एटा पड़िबो बिकॉज़ यूरोपियन माने जो भी प्रोड्यूसर्स अछंती मैन्युफैक्चरर्स अछंती तांको पई गोटे अलगा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अछि कि आपण एते की यूनिट रो कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करि परिबे वेस्ट रॉक को प्रॉपर्ली ट्रीट करिवे एक्सवाइजेड कंडीशन जो कंडीशंस गुडा को अन्य कंट्री रे न थाई पारे सपोज इंडिया रे नाही अफ्रीका रे नाही बुझि परछन तो जेतबेले सपोज माने अन्य कंट्री रो किछि प्रोडक्शंस फार्म्स तांको प्रोडक्ट को यूरोप को पठौचंती देन यूरोप तापरे गोटे एक्स्ट्रा टैक्स रखेबो ओके तो एई जिंसटा को हम कहूछु कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट ताकू इंडिया अपोज करूछु यस सर बुझिले प्रश्न यस सर बुझ पाई आउ थरे गोटे थरो जो हाइलाइटेड पॉइंट अछि ताकू गोटे थरो देखि देबे आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग दिस अदरवाइज फील फ्री टू आस्क मी ओके नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें जानि छे एटा पेरिस एग्रीमेंट जो हेतला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 कॉप 21 ता साइड लाइन रे इंडिया और फ्रांस मिसे के इंटरनेशनल सोलर अलायंस करथले जाडा हेडक्वार्टर इंडिया रे अछि गुरुग्राम रे अछि ओके तो तार रिलेटेड न्यूज़ कोन जो गोटे सोलर फैसिलिटी कोहि की डिस्कशन रे थिला वर्तमान जो माने जनरल असेंबली अछि सोलर माने इंटरनेशनल सोलर अलायंस रो ताको अप्रूव कर देछि तो सोलर फैसिलिटीज कोन ये गोटे टाइप ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म ओके ए भीतर दीटा कंपोनेंट अछि कोन कंपोनेंट दीटा फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस वन दिस इज कॉल्ड द सोलर पेमेंट गारंटी फंड माने गोटे गोटे फंड करा हला जहा थ्रू रे जो सोलर जे भी सोलर पई किछि प्रोजेक्ट्स पई किछि फंड्स नै थिबो तार गारंटी से एस्टैब्लिश करियो फर्स्ट जिंस सेकंड जिंस होछि सोलर इंश्योरेंस फंड ओके सोलर इंश्योरेंस फंड माने सेकेंड माने सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रो आ तार रीपेमेंट प्रोसीजर रो गोटे टाइप रो इंश्योरेंस होला जेतो आपण लोन नोचन लोन ऊपर इंश्योरेंस होछि तो इट इज समथिंग लाइक दिस ओके तो माने कथा कोन काहे के एटा एस्टैब्लिश कराला सोलर फैसिलिटी बिकॉज़ जो किछि अफ्रीकन कंट्रीज अछंती ता लो इनकम कंट्रीज अछंती जो मानन को पाखरे पोटेंशियल अछि सोलर पे जनरली कोन आपण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया जोटी सोलर रेडिएशंस टिके हाई थाउची सेठी अधिक चांसेस अछि हार्नेस करिया ताई बट जो अफ्रीकन कंट्रीज अछंती बा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अछंती से माने पे एते रिसोर्सेस नाही सोलर पैनल एस्टैब्लिश करिया ताई बा लार्ज स्केल रे किछि सोलर पार्क्स क्रिएट करिया ताई सो दैट्स व्हाई दिस particular facility will provide them fund to harness the solar energy okay that's all you should remember this much
आमे जानते जो आमे कहले दिस इज सोलर अलायंस केबे कोन हितला दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑब्जेक्टिव कोन ओटे स्ट्रेटजी 1000 अछि स्ट्रेटजी 1000 कोन टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी 1000 बिलियन रो इन्वेस्टमेंट आसबा दरकार देन 1000 बिलियन पीपल पाखरे से सोलर एनर्जी पहुंची परियो दरकार नेक्स्ट होची 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी हमें जनरेट करिया दिस इज द वर्ल्ड लेवल रे ग्लोबल लेवल टारगेट नॉट इंडिया रो ओके तो इंडिया रो टारगेट होची कोन 175 गीगाहर्ट्ज रो यू कैन से सोलर एनर्जी हमें जनरेट करिया दैट इज द टारगेट ऑफ इंडिया ओके आ गोटे भितरे अलाइड कांसेप्ट अछि सेटा कोन गोटे एमओयू साइन हिची इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एका तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कोन इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर गोटे वॉचडॉग कहले चले इंडिया रो रिप्रेजेंटेटिव डीजीसीए माने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सो लाइकवाइज एवरी कंट्री रो रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती जो माने भी एविएशन रिलेटेड जो माने भी एयरक्राफ्ट चलुछंती तो से मानन को सब कंट्री रो रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती सेट ओके तो ए इकाओ विषय देखिए एटा शिकागो कन्वेंशन हेतिला तो सेहितु आस्तिला ता हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा रे अछि नॉट वेरी इंपोर्टेंट इंडिया इज ए मेंबर टू इकाओ दैट्स ऑल ओके तो एमओयू कोन हेछि मानन भितरे कि एविएशन सेक्टर मध्ये रेस्पोंसिबल फॉर द कार्बन एमिशन जेमति कि एविएशन सेक्टर इज रेस्पोंसिबल फॉर 2.5% ऑफ टोटल CO2 एमिशन ओके सेति पई माने जते एयरपोर्ट्स रहिला एयरपोर्ट्स को हमें कोइ ग्रीन एयरपोर्ट करि जेमति कि इंडिया रो कोचीन एयरपोर्ट एटा प्रथम एयरपोर्ट इंडिया रो जोटा कि फुल्ली रन्ड बाय योर सोलर पावर दैट कैन आल्सो बी डन सेकंड जिंसो जो एविएशन फ्यूल अछि ओके सो एविएशन फ्यूल को मध्ये हमें ग्रीनर करि परिबा जेमति कि आपण सुनिथिबे किछि वर्ष तळे इवन ओपीएससी गोटे क्वेश्चंस मध्ये पचाइतला बायो फ्यूल रे फर्स्ट टाइम पे गोटे एयरक्राफ्ट उड़ीथिला ओके हैव यू हर्ड अबाउट दैट क्वेश्चन आई डोंट नो तो से जिनसटा पचाइतला को एयरक्राफ्ट उड़ीथिला कोट तो स्पाइस जेट रो गोटे एयरक्राफ्ट सेटा उड़ीथिला दैट्स ऑल तो एमटी टाइप रे किछि इनिशिएटिव निया जे पारिबो सो इट इज एन कोलिशन हां तो एटा गोटे टाइप रो अलायंस फॉर्मेशन हेछि सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आउ सिविल एविएशन ओके Next, coming to GEF. जेमति हमें बर्तमान गोटे फैसिलिटी को पढिले बट जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द सोलर फैसिलिटी कोन कोतला सोलर इंस्टॉलेशंस का सोलर पावर सोलर प्रोजेक्ट पई फंड्स प्रोवाइड कोतला लाइकवाइज आ गोटे फैसिलिटी अछि हमें कोछु ताको GEF दैट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मो एटा काली कहिथिली जो हमें रियो पढुतलु रियो समिट 1992 रो तो रियो समिट रो आउटकम पांचटा जिंस कहिथिले गोटे कोन रियो एजेंडा आस्तिला गोटे रियो डिक्लेरेशंस आस्तिला एजेंडा 21 आस्तिला सीबीडी आस्तिला सीसीडी आस्तिला एंड यूएनएफसीसीसी आस्तिला ए पांचटा छाडला पर आ गोटे जिंस आस्तिला दैट इज कॉल्ड योर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ओके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कोन करिवो जते भी सब ग्रीन प्रोजेक्ट्स आने देखिया को प्रोजेक्ट कवर होची किछि ग्रीन प्रोजेक्ट्स जुकुटा का रहिला ग्रीन इनिशिएटिव्स रहिला ताको फंडिंग दरकार सपोज सी किछि वर्ष पूर्वे जे जानथिबे आपण सीएफएल यूज करथले घरे ओके जे देखिथिबे कि सीएफएल बल्ब पूर्वरु गोटे सोडियम बल्ब जो माने येलो कलर लाइट रो सेटा हम यूज करथले फिलामेंट बल्ब जो कहउछु तो फिलामेंट बल्ब को रिप्लेस करू सीएफएल को बर्तमान रिप्लेस करछु एलईडी बल्ब से ए जो बल्ब गुडा हम रिप्लेस करछु गवर्नमेंट सब्सिडी दे के रिप्लेस करछु जे सुनिथिबे माने बेल बेले बहुत कम प्राइस पे आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस 60 रुपीस 80 रुपीस किछि रे गोटे बल्ब समान दोथलो मे बी आउ कम रे भी दोथलो मतलब एग्जैक्ट प्राइस मन ओके तो ए सब जिंस फंडिंग केमति होछ जो माने सेटा उज्ज्वला से होउ कम कहली तो से जो हम एलईडी जो गोटे प्रोवाइड करातला उज्ज्वला स्कीम से एटा को हाव जीवो तो गोटा गवर्नमेंट हां माने एग्जैक्ट प्राइस ता मत मन पड़े से उज्ज्वला रे करंतु जे माने जेतो से हमें गोटे ग्रीन इनिशिएटिव्स नौचे जेते बळे भी माने जोटा लेस क्लाइमेट पॉल्यूटिंग जिंस तो सेते बळे हमो किछि फाइनेंस दरकार ना तो हट्टा तेते पैसा कोठी आछि गवर्नमेंट पाखरे किछि माने जो हमें कहूछु किछि गोटे फाइनेंसिंग एजेंसी रहिबा दरकार ना जे हमको ताको फाइनेंस करियो वर्ल्ड बैंक हमें लोन नौछु बा अदर कंट्रीज हमको हेल्प करूछन यू डेवलप कंट्रीज दैट इज फाइन बट गोटे मेकानिज्म हवा दरकार जे के पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को बा कन्वेंशंस को बा कोनोसी ट्रीटी को जे के फाइनेंसिंग करियो फंडिंग करियो तो दैट वाज द वर्क ऑफ योर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ओके तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी रो बहुत ओडे माने रिपीटेड टाइम रे डिफरेंट मीटिंग होची 64th मीटिंग हेतला जोटा कि हमें कहूछु जीएफ ट्रस्ट फंड 7 तो पतन ट्रस्ट फंड 7 रो काम सरला नु आसीबो ट्रस्ट फंड 8 आसीबो तो एमती कंटीन्यूअसली चलिबो ओके से ट्रस्ट फंड विथ हमहु जिबर ने दैट इज नॉट ऑफ फॉर कंसर्न से इंपोर्टेंट मध्ये नु बस एतिकी जानंतु एटा गोटे फॉर्मेशन हेतला रियो सहित ओके जा काम होची जो भी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स गुडा को नौचु ताको फंडिंग करिया पई ओके तो दैट इज द फंडिंग साइकिल इट विल जनरेट
तार रिसेंट जो मीटिंग हेतला इट इज द 62nd मीटिंग। नेक्स्ट जीएफ काउंसिल जो रहिला जीएफ गोटे बॉडी जो हम तैयार कले तार गोटे काउंसिल बनिबो तो जेंति समस्त को जनरल असेंबली काउंसिल कथा को एमति गोटे काउंसिल जे कि डिसाइड करिवो कि को प्रोजेक्ट को फंडिंग कराबो काहा को केते फंड कराबो को कंट्री को प्रायोरिटी बेसिस रे फंडिंग कराबो से सब डिसीजन सेन होबो। ओके इट इज द मेन गवर्निंग बॉडी। इंडिया इज आल्सो ए मेंबर टू जीएफ। ओके जेटिके जीएफ विषय जे देखिया को चेष्टा करिवे तो अगेन एज आई टोल्ड यू इट इज फ्रॉम द रियो रु आस्थिला। ओके तो ऑब्जेक्टिव्स कोन ऐसु जिंस मु कहितली आपन को हां को माने जीएफ इज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन। को पांचटा रियो रु जो तीनटा आस्थिला दैट इज देयर जेंति सीपीडी यूएनएफ सीसीडी एंड यूएनएफ सीसीसी ए पांचटा ए तीनटा तो अछि ताको छाडला पर मिनामाटा कन्वेंशन एंड अगेन द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। स्टॉकहोल्म काली हम पहुंचते जोटा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपीस तथा कहूचे एंड अगेन मिनामाटा इज विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी। ओके मर्क्यूरी पॉल्यूशंस तो ए इनिशिएटिव्स ए कन्वेंशंस गुडा को फंडिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करिया पे योर जीएफ हैज बीन ब्रॉट इनटू पिक्चर। तो जीएफ भितर भी किछि छोटो छोटो फंड्स चले जीएफ गोटे जीएफ बाबंतु गोटे वर्ल्ड बैंक ओके काइंड ऑफ गोटे बॉडी क्रिएट कराला ता भितर वर्ल्ड बैंक भी तो बहुत गोटे इनिशिएटिव्स नै छि इंडिया पय गोटे इनिशिएटिव नै छि अफ्रीका पय गोटे इनिशिएटिव नै छि तो एमते ता भितर भी किछि स्कीम्स गुडा चलिबो जेमति गोटे बैंक भितर आपण फिक्स डिपॉजिट थाउची आरडी थाउची लोन्स रो किछि फैसिलिटीज थाउची लाइक दैट। ओके तो सेमति कोन कोन फैसिलिटीज अछि गोटे होची स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड आ गोटे होची लीस्ट डेवलप कंट्री फंड। ओके ताकू छाडला पर आ गोटे जीसीएफ भी आसे जीसीएफ ता कोन जेतबेले ए रियो समिट रो गोटे रियो रो जो समिट्स गुडा को चलथिला से रियो समिट जेतबेले कैनकुन रे हेतिला 2010 रे तो सेठी गोटे आस्थिला जीसीएफ इट इज द ग्लोबल क्लाइमेट फंड तार कोन एजेंडा थिला 2020 सुधा हमें 100 बिलियन डॉलर का रेज करी जोटा कि क्लाइमेट फाइन यूज होगा। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबल you can say global environment facility। हाँ ताकू छाडला पर आउ जो छोटो छोटो किछि ट्रीटीज गुडा को मध्य ये सपोर्ट करे जेमति कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन द सी ट्रीटी मार्पोल ट्रीटी काली मार्पोल ट्रीटी कथा जो 42 वाटर कथा हम कहउछली से गुडा सब दिस आल्सो बीइंग फंडेड यू कैन से ओवरलुक बाय योर जीईएफ बट ब्रॉडली जीईएफ कथा में जेतो लोक ए पांचटा कन्वेंशंस कथा हम मन रखिया दैट्स ऑल। तो गोटे स्मॉल डिफरेंस जानतो एते डिटेल भितर कुछ जाने मु जो दीटा कहली गोटे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड आ गोटे होची लीस्ट डेवलप कंट्री फंड। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड ता कहा पई दिस इज फॉर योर आइलैंड कंट्रीज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पई आ जो हमें कहूछु लीस्ट डेवलप कंट्री ऑब्वियसली ना ही कहूची जो गोटा का अंडर डेवलप कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज गोटा को रहिले से मानो पई दिस फंड इज डेडिकेटेड। ओके आ गोटे छोटो भितर इनिशिएटिव थिला जीएफ स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम इटा कहा को एवडा लोकल बॉडीज को से ग्रांट देबे। ओके लोकल बॉडीज को ग्रांट्स देबे कोन पई बहुत छोटो ग्रांट अप टू $50,000 पर्यंत डायरेक्टली फंड्स रिलीज करियो से माने डिफरेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करियो दैट आर ग्रीन इन नेचर। ओके अदर इनिशिएटिव्स किछि मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन द क्लाइमेट चेंज नॉट दैट इंपोर्टेंट। ओके एवडा को पढी बसिले सब पढुथु एमसी is किछि important you can skip this। okay तारो जहां भी related news अछि we are going to study through the one liners of MCQs for mains also this you won't find any relevant information over here। okay काहे कि बहुत अधिक पढी जाम हे जेबे बिल्कुल so try to evaluate which is important which is not। तापसला इंडिया रो एनडीसीज एनडीसी कोन जेतोले हमरो पेरिस एग्रीमेंट हला 2015 रे तो सेठी गोटे टर्म उठी के आतला दैट इज कॉल्ड एनडीसी। एनडीसी रो फुल फॉर्म होची नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो हमें आगु कोन देखथिले काली पे विषय डिस्कस करथिले हम जेतो रियो थिला रियो अंडर रे जेतो क्योटो प्रोटोकॉल आस्थिला से भितरे कंट्रीज को डिवाइड कराइतला एनेक्स 1 कंट्री नॉन एनेक्स कंट्री लाइक दैट। ओके तो एनेक्स कंट्री ऊपर कोन थिला सेमान ऊपर ऑब्लिगेशंस थिला से भितरे पुनी दीटा पार्ट ओईसीडी कंट्रीज अलगा थिले पुनी यू कैन से इकोनॉमी इन ट्रांजिशंस माने जो ऑलमोस्ट डेवलप्ड हे गले से मानको सेही टाइप रो कंट्री थिले तो सेही कंट्रीज ऊपर ऑब्लिगेशंस थिला जे से माने निजर कार्बन एमिशंस को कम करिवे। ओके किंतु नॉन एनेक्स कंट्रीज ऊपर कोन से ऑब्लिगेशन नथिले तो इट वाज नॉट वेरी गुड इन द क्लाइमेट सिनेरियो अनुसार तो ताकू टैकल करिया पई एनडीसीज नै कि आसले पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट कोन कहूची इक्वल बट डिफरेंशिएटेड। ओके तो समस्त कंट्रीब्यूट करिवे बट
समस्त शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट बिकॉज डेवलप्ड कंट्री अच्छी अधिक एमिट कर सारी पास्ट दे आर गोइंग टू एमिट दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट मोर कंपेयर्ड टू ए अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री ओके तो सेतबेले गोटे कांसेप्ट आसला एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आमे डिटरमाइन करिया जे आम कंट्री केते कंट्रीब्यूट करबो आ सेही गोटे डेटा आमे जणैबा काहाको पेरिस एग्रीमेंट को आमे जणैबा ओके आउ ताकू रिकरेंटली आमे फॉलो करिवा जे हम टारगेट को आमे अचीव करू छ ना नाही एंड अगेन वन मोर से भितर क्राइटेरिया थिला जे प्रति 5 वर्ष रे निज निज टारगेट को आमे रीसबमिट करिवा ताको पुनी आउथरे रिविजिट करिवा देखिवा जे हमरो जहां भी कमिटमेंट्स थिला जहां टारगेट्स थिला whether we are able to reach that or we are falling short of that okay ता विषय में डिटेल टिके देखिबा इंडिया एनडीसी विषय तो इंडिया एनडीसी रिसेंटली इंडिया गोटे एनडीसी रिपोर्ट सबमिट करी छी माने रिवाइज रिपोर्ट ऑलरेडी 5 इयर्स हो गलानी तो रिवाइज रिपोर्ट सबमिट करी छी फर्स्ट टाइम पे इंडिया सबमिट करथा 2015 रे एबे रिसेंटली अपडेटेड एनडीसी दै छी कोन कोन इंडिया रो कमिटमेंट्स थिला जस्ट सी ग्लासगो रे इंडिया रो दबार थिला बट परे देला एटा ग्लासगो रे इंडिया गोटे टाइप रो आउटलुक दे दितला पंचमित्रा थ्रू ओके कौन थिला देन 2017 सुधा हम कार्बन न्यूट्रल हबु 500 गीगावाट रो 2030 सुधा हम नॉन फॉसिल फ्यूल में एनर्जी जनरेट करिवो ओके रिन्यूएबल एनर्जी यू कैन से अब 50% ऑफ योर जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आसीबो सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेस आसीबो देन रिडक्शंस हमें करिबा जो भी वन कार्बन फुटप्रिंट कार्बन एमिशंस अछि ताको 1 टन्स पर्यंत हमें रिड्यूस करियो बाय 2030 केमती करिवा कार्बन कैप्चर्स यूज करके गतकाले हम देखुथिले जो हमें एफोरेस्टेशंस करू रिफोरेस्टेशंस करू अदर मेजर्स अछि कार्बन कैप्चर हमें ताको भी आज डी करिवा सो दैट इज द इंडिया रो कमिटमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कहूछु जो हमरो कार्बन इंटेंसिटी अछि कार्बन एमिशन रो इंटेंसिटी अछि दैट वी आर गोइंग टू ब्रॉट डाउन 45% ऑफ आवर जीडीपी बाय 2030 तो कार्बन एमिशन रो इंटेंसिटी अर्थ कोन माने जे कोन से हमें गोटे इंडस्ट्री यूज करछे बा किछि ट्रांसपोर्टेशन हमें यूज करछु तो से किछि एमिट करछु ना किछि कार्बन तो एमिट करछु ओके सेटा हमें विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी हमें ताको कैलकुलेट करिवा ओके हम जदि हमें एमसी कोइ दवा जे 1992 लेवल रो तो 1992 रे इंडिया रो जीडीपी थिला ही केते ओके ता लेवल रे जदि हमें कंपेयर करिया कछु इट विल बी नथिंग माने हमें ताको बहुत इजीली अचीव करदा बट रियलिस्टिक इट विल नॉट बी रियलिस्टिक तो हमें कोन कहूचे 45% ऑफ आवर जीडीपी माने शुड बी कार्बन यू कैन से कार्बन न्यूट्रल ओके तारो सेति हम रिडक्शंस करिया सेति के कार्बन को हम रिड्यूस करिया कार्बन इंटेंसिटी को हम कम करिया इट्स लेमन लैंग्वेज हम बुझाउ चेष्टा कर ओके तो लेट्स सी हमर कोन कोन एनडीसी अपडेट हेची दिस इज द प्रीवियस एनडीसी जोटा 2015 रे हमें सबमिट करथले एटा रिसेंटली हमें अपडेट करले जेमति कि आगुरु थिला हमर जो एमिशन इंटेंसिटी जो जस्ट डिस्कस करले इट वाज फ्रॉम 33 टू 35% बट इंडिया ताकू बढ़ितला 45% को काहे कि बिकॉज़ ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड 28% ओके 2005 लेवल तो ऑलरेडी 28% हमें अचीव कर सारछु दैट्स व्हाई वी हैव इंक्रीज दिस नेक्स्ट जो हमरो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कथा कहछु 40% टारगेट थिला बर्तन तक 50% कर काहे कि बाय दिस टाइम ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड 43% बियॉन्ड आवर टारगेट वी ऑलरेडी हैव रिसीव्ड जो कार्बन कैप्चर बा कार्बन सिंक रो जो थिला टारगेट सेटा को जेंति कि सेंति रखिले सी समटाइम्स ना यू विल बी कंफ्यूज्ड केमती कंफ्यूज हेते कहिबे जे 80 गोटे टारगेट दोचे एत 2.3 बिलियन लिखाई छी आ 80 काहे कि लिखाई छी 1 बिलियन सी दिस इज नॉट एनडीसी दिस इज अ पंचमित्र जोटा कि ग्लासगो रे पीएम मोदी को आस्थिले दैट इज डिफरेंट ओके एनडीसी इज द रिटन डॉक्यूमेंट दैट इंडिया यूज्ड टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ योर पेरिस एग्रीमेंट ओके सर एटा बाइंडिंग रहउची नॉट बाइंडिंग बट आमो तरफ हमर गोटे टाइप रो ग्लोबल कमिटमेंट रहिला ना not binding no one is going to impose any fine but like india ame jodi gote कोच फ्रंट रनर कंट्री जे कि वर्तमान क्लाइमेट पई बहुत किछि ईगरली ame काम करछु then if we are falling short of our target it is not good no global scenario re see as you become you can say माने जेमति ग्लोबली आपनकर पावर बढ़ियार लागि छि तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस देन बहुत जो कमिटमेंट ना तारो responsibilities भी बहुत अधिक था ओके at any cost you want to achieve that otherwise ना से diplomatic relations रो एते वेटेज रहिबो ओके तापरे ए जो हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे हमरो लाइफ मिशन लाइफ कथा हम गतकाले देखथिले केमते हम लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल करिवा पीएम मोदी को कहथिले यूथ को केमते अडॉप्ट करिया पे लाइक दैट आउ जो अदर पाथवेज गुडा को रहिला दैट आल्सो दैट रिमेन सेम एज अर्लियर किछ हम चेंज करी ना ठीक है So mostly you have to remember these three: 1,
2 and 3 जोटा कि मेंस रे भी हेल्प करियो आपन adaptation gap report 2022 what is adaptation gap report एटा पब्लिश करछि UNEP से कोन कहूछि see we are short of $17 billion जे कोनसी जेमति म कहूतिली जो GEF कथा डिस्कस कला बेल को जे कोनसी गोटे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करिया को हेले सपोज हमकु रिप्लेस करियार अछि थर्मल पावर विथ सोलर पावर what we need one okay so like that adoptions को properly meet करिया पई हेले so what we are seeing कि more than 8 out of 10 countries and 84% of the parties to the UNFCCC have at least one national adaptation planning instrument. समस्त planning instrument अच्छी थिला परे मध्य what we are seeing we fell short of around 17 billion US dollar. ए एतिकी टंका अभाव चुकु हमर जो टारगेट थिला जो हिसाब रे हमको चिबार थिला we are not on our track to the carbon adoptions. Okay. So that is the carbon adaptations कथा कहले हम आउ आकु रिपोर्ट पब्लिश करछि UNEP यूनिटी ब्रीफली देखतेबा 1972 रे हितला के मिसी करथले सो आउटकम ऑफ योर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट जो हमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कथा कोचो तारा आउटकम रे आसीथिला हेडक्वार्टर कोट अछि इट इज इन नाइरोबी केनिया इंडिया इज अ मेंबर 193 कंट्रीज अछंती ऑब्जेक्टिव कोन स्टेट तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को ये सुपरवाइज करे यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ many agreements achi that is being administered by the UNEP starting with these sites dekhi che hame next CMB that is convention on migratory birds that have born conventions madhya pochu 1979 re hitala Vienna conventions related to ozone dekhitile Basel conventions ko kochi transboundary hazardous substance ro transboundary jo shifting hochi it regulates on that next fifth one is the CBD जो हमें CCC CBD से कथा पूछे it is on CBD biological diversity कथा again the Rotterdam convention जो Rotterdam conventions को पूछे it is जो chemical बा hazardous substances रहला pesticides रहला तारो international trade को govern करूची next one is the Stockholm conventions that is the जो organic pollutants persistent organic pollutants and finally Minamata that is with respect to your mercury. Okay, these are very important initiatives. Anyhow, you have to remember this because mains वगैरह भी तब answer writing का you have to use it. Okay. ऐसे वगैरह भी ऐसे जाए environment related. If you are getting that, then obviously these terms will fetch you good amount of mark. Emission gap कौन? गोटे country गोटे commitment देची, but if he is lagging behind that, then that is called the emission gap. So it is the gap between the pledge taken by different countries to reduce the greenhouse emissions and the estimate reductions required to maintain the average global temperature to rise to 2 degree, preferably by 1.5 degree, because Paris Agreement को जो detail अपन देखिए तारो dual goal हमें कोचो से माने कौन कोई चंती anyhow we will have to take initiative to keep our temperature within 2 degree, but again simultaneously we will try to keep it 1.5 degree. 1.5 degree पे हमें चेष्टा तो करिबा, but anyhow by hook or crook we have to limit our emission within 2 degree. माने 2 degree भीतर तो ग्लोबल वार्मिंग को जेमते भी रखिबा, but हमें तथापि चेष्टा करिया 1.5 भीतर रही जाओ. It is like that. हां ओम कोंतु यार नो क्वेश्चन होजी जे जो आपण जो कहले प्लीज कथा 100 बिलियन प्लीज तो डेवलपिंग कंट्रीज करिवो कोन इंडिविजुअल गोटे कंट्री 100 बिलियन फंडिंग करिवो कोठे कहले कानून कथा ना ना ए जो ना ना बंधु ए जो यूएनईपी रे पूर्वटा जो कहले जो लैक करूचंती हां 17 बिलियन यस सर अडॉप्शन गैप रिपोर्ट रे सर ए जो 100 बिलियन जो प्लीज ता लिखा हिची सेकंड पॉइंट रे सर टू डेवलपिंग कंट्रीज से सब डेवलपिंग कंट्रीज पाई ना इंडिविजुअल डेवलपिंग ना 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 सब मिसी गोटे इंडिविजुअल एते कले तो माने पैसा रे भासी जियो सब मिसी के दवा पे राजी नहंती ता माने सर से माने 83 बिलियन प्लीज को अचीव करिसंती हां माने मिटिगेशन करी माने नहले हम सब फंड्स जेमते हम रिसेंटली आई थिंक 1 ईयर बैक और लेस देन 1 ईयर बैक गोटे जिंस देखियो जर्मनी गोटे किछि फंड्स इंडिया को बिकॉज़ तांकर सब प्लेजेस अछि पार्ट कोनो से कंट्री से माने इन्वेस्ट करिवे यूएनईपी द्वारा केवल जो अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट ता केवल बाहरिबो जे केते हमें लैक करूचे ना से आउट
एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट रे सब किछि देखियो माने एडाप्टेशन रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट से माने जज करियो बट रिसेंट रिपोर्ट हाइलाइट करिछि जे एडाप्टेशंस पे ऑब्वियसली फाइनेंस इज ए इंपोर्टेंट मैटर और फाइनेंस रे हमें एतिकी बिलियन शॉर्ट पड़ुछि तो फाइनेंस जो डेवलप्ड कंट्रीज करो जो डेवलपिंग कंट्रीज पे जो कमिटमेंट थिला दे आर लैगिंग बिहाइंड दैट इट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट इज बीइंग हाइलाइटेड दैट्स ऑल तो केवल से फाइनेंस को हाइलाइट करूनी से थर्ड पॉइंट है ठीक है सर थर्ड पॉइंट है ठीक है Ada, adaptation finance gap in the developing yes, countries is like to 5 to 10% greater than the current international adaptation finance flow. वर्तमान जो फ्लो होउची ताठू 5 to 10% अधिक दरकार से मानको तांको जदी प्रॉपर गोल्स को अचीव करियर अछि सेति की दरकार बट as per the requirement they are getting only this much less. Suppose you need 5 lakhs, you are getting only 1 lakh, or you need 10 lakh, you are getting only 1 lakh, like that. yes sir thank you sir thank you. Okay. ठीक अछि तो विल बी मूविंग अहेड नेक्स्ट होची कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज जोरा हमें कस कहूछु व्हाट इज कस नीति आयोग लॉन्च करछि रिसेंटली एक्सेप्ट हेलन हाँ इट इज नीति आयोग लॉन्च करछि गोटे फ्रेमवर्क कॉस्ट को इंप्लीमेंट करिया पे सी हमें बुझिबा एटा जिंसटा कोन ओके इट्स ए पार्ट ऑफ मिशन इनोवेशन जो हमें देखिथिले मिशन इनोवेशन गतकाली मिशन इनोवेशन तो 17 पॉइंट थिला से भितर बायो रिफाइनरी गोटे थिला गोटे कार्बन कैप्चर्स मतलब आ गोटे पार्ट थिला ओके इट इज एन इनिशिएटिव विद इन दैट नीति आयोग आकु सुपरवाइज करिवो इंप्लीमेंटेशंस करिवारे हेल्प करिवो जिंसटा कोन कार्बन को हमें कैप्चर करछु तो सी देयर आर थ्री थिंग्स कार्बन को हमें प्रथमे कैप्चर करिवा विल ट्राई टू कैप्चर द कार्बन फर्स्ट. Second, there is a transportation of the carbon, there is a utilization of carbon, and finally there is a storage of carbon. Okay. माने फ्लो रेट के बुझे को चेष्टा करिवे तो प्रथमे कार्बन को मैं कैप्चर करछु हाउ वी कैन कैप्चर द कार्बन देयर आर टू वे गोटे नेचुरली कैप्चर हुए बेले बेले ताको हमें आर्टिफिशियली भी कैप्चर कर पाछु ओशियन फॉरेस्ट माने निजे ही कैप्चर कर दियंती नेचर बिकॉज़ बिफोर द ह्यूमन माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपे तो कार्बन कैप्चर होउथिला ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे हो अदर सी ग्रास वगैरह हाइट माने वाटर रे इटसेल्फ डिसॉल्व हेकी तो दैट इज देयर नेक्स्ट कमिंग टू द आर्टिफिशियल हमें कोन करि परिया प्री कंबशंस करि परिया पोस्ट कंबशंस करि परिया ऑक्सी फ्यूल्स टाइप रो भी इंजिन्स को हमें यूज करि परिया जोटे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस हमें फ्यूल को बर्न करछु ता फॉर एमिशन ऑफ कार्बन इज बीइंग ब्रॉट डाउन so there are n number of ways so just we have to remember there are two things natural process रे भी कार्बन कैप्चर ही परिबो artificial process natural process विशेष तो हमें विशेष किछि करूनो the max we can do is we can go for more forestation but बेसी अधिक forestation भी हमें कर पे we have our limitations we have our populations okay so एमटी नाइ जे populations against जे हमें ताको घर उठी के ताको सेठी गछ लगे it's not like that next तो हमें once हमें कैप्चर कर देले by any means okay now that captured जो भी हमरो we can say कार्बन हला ताको हमें कोन करिबा we can use it okay use केमती कर पे जो भी हमरो जेमती कूलिंग एजेंट्स हम यूज करूछु कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम यूज करूछु ओके नेक्स्ट एग्रीकल्चर पे यूज होउची जो फूड एंड बेवरेजेस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कथा कहिदे फायर एक्सटिंग्विशर्स तो देयर आर सर्टेन यूज ऑफ द कार्बन्स आल्सो इन आवर माने इंडस्ट्रियल लाइफ सो दैट कैन बी द यूसेज ऑफ कार्बन नेक्स्ट ताको मैं ट्रांसपोर्ट कले तो ट्रांसपोर्ट केमती कर पे शिप रे ट्रांसपोर्ट कर ट्रक रे पाइपलाइंस रे डिफरेंट मींस में ताको ट्रांसपोर्ट कले डेस्टिनेशन से पहुंचिया परे ताको मैं स्टोर करिया स्टोर्स केमती करछे हमें ताको अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस रे ताको स्टोर करछु बेसी डिटेल कुछ बात दरकार नहीं इट इज लाइक ए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ओके so this is the process of CUS India ताको की implement करिवो it is by the नीति आयोग it is one of the part of your जो हम मिशन इनोवेशन थिला सेटा मिशन इनोवेशन गोटे पार्ट कार्बन कैप्चर करिया पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अछि यू कैन सी केमिकल सॉल्वेंट थ्रू रे फिजिकल सॉल्वेंट थ्रू रे एडजॉर्प्शन थ्रू रे क्रायोजेनिक सेपरेशन थ्रू रे डिफरेंट प्रोसेस अछि डिटेल्ड विथ इफ यू रियली वांट यू कैन गो but otherwise you can leave it okay just you should have the broad idea कि हमें कौन करूछु और केमिति हम पाके वेज अछि okay next is uniform carbon trading market see जेतोले हम ट्रेड कथा कहूचे तो जेतोले गोटे माने मेजरिंग यूनिट थिबा दरकार कि आपण किछि market को जाउचंती purchase करिया पे you know when you are going to buy the oil it should be in terms of liter when you are going to buy some grain it should be in terms of a kg so like that किछि गोटे माने यूनिट थिबा दरकार मेजरिंग यूनिट थिबा दरकार कार्बन क्रेडिट कहूछ हम सेठी तो कार्बन क्रेडिट थ्रू रे
ताको गोटे बार्टर सिस्टम टाइप रो भाबंतु इट इज बीइंग ट्रेडेड ओके तो कार्बन क्रेडिट रे कोन होची वन कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड जदि गोटे गोटे कंट्री पाखरे गोटे फार्म पाखरे गोटे प्रोड्यूसर पाखरे गोटे कार्बन क्रेडिट अछि तार अर्थ से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रो एमिशन को कम करछि बा से ताको स्टोर करि पारछि बा अदर मींस रे से कार्बन जो भी हमर क्लाइमेट चेंज रो से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रो यू कैन से रिडक्शंस करि पारछि एनी मीन ओके लेट्स सी देयर आर टू एमिटर देयर इज ए एमिटर 1 देयर इज ए एमिटर 2 दी जन को पई किछि टारगेट्स दिया गला टारगेट्स किए देला इधर तको कंट्री नीचे देला बा कंट्री 1 को टारगेट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थ्रू रे डिफरेंट एग्रीमेंट ट्रीटी कन्वेंशंस थ्रू रे हम मिलुछि जेंति पेरिस एग्रीमेंट थ्रू रे किछि माने हम समस्त एनडीसी थ्रू रे टारगेट देला तो दीटा एमिटर होछंती एमिटर ए एमिटर बी ए जो पार्ट देखछन दिस इज योर टारगेट ओके तो जो बी रहिला से कोन कला टारगेट रु कम रिडक्शंस माने कम एमिशन कला माने तार एमिशन होछि ओनली दिस मच ओके वेर अबाउट जो एमिटर ए रहिला सी एतिकी एमिट कला तो इट इज एमिटिंग एक्सेस इट इज एमिटिंग लेस तो जेहेतु ये लेस एमिट कला तो आप अगर सपोज भाबंतु कि आप अगर चांस थिला 100 यूनिट को एमिट करिया नाउ ही हैज ओनली एमिटेड 80 यूनिट और ता पाखे 20 यूनिट वर्थ बफर अछि तो सी कोन करियो ए 20 यूनिट को 20 कार्बन क्रेडिट हिसाब रे तब कंसीडर कला जेहेतु आप पाखरे एक्सेस ही गला एक्सेस एमिशन करला तो ये आपको सेल करि परिबो ता अगेंस्ट तब किछि पैसा मिलो दैट इज ग्लोबली डिटरमाइंड ताकू से को अमाउंट रे ट्रेडिंग हबो को माने एमती नै जे ब्लैक मार्केटिंग हो बा अदर किछि मींस हो प्रॉपर वे रे से जिंसडा एस्टैब्लिश हे करो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्लोबल यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इटा हबा दरकार वी आर टॉकिंग अबाउट दैट okay so central government is considering to implementation of the carbon trading scheme which will subsum all the carbon trading mechanism jete bhi india ro अछि ता सब गुडा को बर्तन मजूरिंग जीएसटी आसला तो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबसम करी कि गोटे टैक्स नहीं आसला तो लाइक दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर दैट जते बेले आसीबो ता विषय हम डिटेल पढिबा कि कोन केमती गवर्नमेंट नै कि आसला तो मु जो कहूतली आपन को तो इंडिया रे वर्ल्ड जो कंट्रीज अछन ताको माने यूएनएफसीसीसी अंडर रे बा ये जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म पाई तीनटा पार्ट डिवाइड कराई छी गोटे एलडीसी कंट्री ताको छाड़ दियंत माने लो डेवलप्ड कंट्री जो ना लीस्ट डेवलप्ड कंट्री देयर इज अ डेवलपिंग कंट्री देयर इज अ डेवलप्ड कंट्री भितरे दीटा पार्ट आछंती गोटे पार्ट होची कोन गोटे पार्ट को हमें कहूछु ओईसीडी कंट्री माने हाईली ऑलरेडी डेवलप्ड हे गलेनी आ गोटे चली ईटीआई माने इकोनॉमी इन ट्रांजिशन ओके ए ईटीआई और ओईसीडी ए दीटा को मिसे के हमें तो कहूछु एनएक्स1 कंट्री कहूछु ओके तो ए कार्बन ट्रेडिंग रे क्योटो प्रोटोकॉल रे अपन देखिबे गोटे टर्म सुनिबे एनएक्स1 कंट्री नॉन एनएक्स कंट्री ओके तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन एनएक्स कंट्री अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल इट इज द डेवलपिंग कंट्री ओके बट जेतो बळे हमें पुनी ताकू डिवाइड करछु जो एनएक्स1 कंट्री को एनएक्स2 कंट्री भीतर एनएक्स2 कंट्री के ए जो ओईसीडी कंट्री गुडा को रहिले जो डेवलप्ड कंट्री गुडा को इकोनॉमिक ट्रांजिशंस को छाड़ी की से मानु को हमें अलगारे रखिछु दैट इज द एनएक्स2 कंट्री ठीक अछि तो क्योटो प्रोटोकॉल अंडर रे दी प्रकार हमर कार्बन ट्रेडिंग हे परिबो दीटा मेकैनिज्म अछि हमर ओके गोटे होछि क्योटो प्रोटोकॉल अंडर रे आ गोटे पेरिस एग्रीमेंट अंडर रे माने दीटा मेकैनिज्म अंडर हम सॉरी एग्रीमेंट अंडर रे ता अंडर रे डिफरेंट मेकैनिज्म अछि ठीक अछि क्योटो प्रोटोकॉल अंडर रे तीनटा मेकैनिज्म थिला गोटे होछि एमिशन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशंस को ओके डिटेल मन रखिबा नाही आमे ती जानिबा जे कोनोसी जण कार्बन ट्रेडिंग करिया को हेले क्योटो प्रोटोकॉल अंडर रे से करि परिबो अदरवाइज पेरिस एग्रीमेंट थ्रू रे करि परिबो जदि क्योटो प्रोटोकॉल अंडर रे कला तापर तीनटा वे अछि इधर से एमिशन ट्रेडिंग परिबो क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म करि परिबो बा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशंस करि परिबो कमिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट रो आर्टिकल 6 अंडर रे लिखाई छि कार्बन ट्रेडिंग विषय रे according to whatever the carbon trading has to be done it has to be in accordance with the article 6 of your Paris agreement okay तो ता भितरे पुनी दीटा जिंस असला गोटे मार्केट मैकेनिज्म आ गोटे नॉन मार्केट मैकेनिज्म दिस मच यू शुड हैव द नॉलेज बेसिक डिटेल हमें भितरे को जिबा नाही सेही भितरे पुनी जो पेरिस एग्रीमेंट रहिला तारो पुनी दीटा वे अछि देन गोटे होची ए दीटा होची मार्केट एडा मार्केट 1 मार्केट 2 ओके दैट्स ऑल बेसी भितरो गले कंफ्यूज जे से भितर को नेक्स्ट अछि इंडिया रे बर्तमान केमती मैकेनिज्म अछि इंडिया रे माने कार्बन ट्रेडिंग रो कोन मैकेनिज्म एडा त हमें विथ रिस्पेक्ट टू पेरिस देखिले बा विथ रिस्पेक्ट टू योर व्हाट इज दैट माने क्योटो देखिले बट इंडिया रे कोन अछि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट गोटे दिया जाउची द्वितीय जिंस होउची कोन देयर इज ए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अंडर द परफॉर्म ट्रेड अचीव
PTA स्कीम कहूँ परफॉर्म ट्रेड अचीव थ्रू रे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अदरवाइज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट माने सिंपल से टर्म रे ना आमे कोन करलो सपोज आपण गोटे घरे एसी लगे ओके तो घरे देखते 5 स्टार एसी 3 स्टार एसी 4 स्टार एसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार एसी लगो तो व्हाट यू आर डूइंग यू आर सेविंग सम एनर्जी हायर द स्टार काउंट लोअर इज द कंजम्पशन रेट तो यू आर सेविंग समथिंग तो भाबन तो सिमिलर टाइप ऑफ गोटे प्रोड्यूसर काम कला देन ताकू कोन मिलला ए एनर्जी सेविंग रो गोटे सर्टिफिकेट मिल जो गवर्नमेंट तरफ ओके किबा ए रिन्यूएबल एनर्जी जणे यूज कला सपोज आपण प्रति दिन माने प्रति मास रे सपोज 100 यूनिट यूज करथले नाउ व्हाट यू हैव डन यू हैव इंस्टॉल ए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट तो नाउ द 100 यूनिट यू नीड यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी तो आपण गोटे सर्टिफिकेट मिल जो दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पुछले दीटा को वे रे इधर वे रे जो इंडस्ट्री को जो सेक्टर को किसी टारगेट दिया हिची से माने पुनी ए टाइप ऑफ जिंस ही पारे जोटा फर्स्ट देखिले कि अधिक कर दबो कि कम कर दबो जे अधिक कला से कम करथिबे वाला ठू ताकू किनिबो लाइक दैट इट हैज टू बी हैपन तो एमानक भितरे जो ट्रेडिंग हबो से ट्रेडिंग कोठी हबो ता पई ट्रेड मार्केट माने जेमति हमें कहूछु आपन को स्टॉक्स किनिया विचार करियार अछि तो स्टॉक एक्सचेंज करिवे इधर बीएससी रु करिवे एमएससी रु करिवे तो लाइक दैट किछि माने कार्बन ट्रेडिंग रो किछि गोटे एक्सचेंज थिबा दरकार इंडिया रे दीटा एक्सचेंज अछि दैट इज वन इज इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आ गोटे होछि पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ओके these are the two exchange okay तो ट्रेड जते भी हो तो ट्रेड्स आर ओनली कहार सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशंस को अछि तार अप्रूवल रे ही हबो ए जो पावर एक्सचेंजेस गुडा अछंती से माने तार अप्रूवल नै कि ही करिवे हियर आल्सो यू कैन से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज तो सेम एक्सचेंज एडीओ सेम एक्सचेंज काम करछि बट से माने कहार अप्रूवल नेबे सपोज गोटे कंपनी रिलायंस कंपनी अछि सपोज से बर्तन अदानी को किछि कार्बन ट्रेडिंग्स बिकिया को जाउछि तो से बिकिया पूर्व कहार अप्रूवल नेबे से बीएससी रे बिकु एनएससी रे बिकु बा ए जो कहली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज रे बिकु बा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड रे बिकु बट कहार अप्रूवल नेबे सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटेड कमिशन बिकॉज सिंपल जिंस ना जेमते हम कहूछु कि गोटे कंपनी अछि तार से शेयर को से बीएससी रे लिस्टिंग करा बा एनएससी रे लिस्टिंग करा ता पूर्व कहार अप्रूवल नोचन सेबी रे अप्रूवल नोचन लाइक दैट ओके हियर सेबी इज माने सेबी टाइप ऑफ फंक्शंस के परफॉर्म करछि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ओके एक्सचेंज कोन अछि दीटा एक्सचेंज अछि ए जो कार्बन ट्रेडिंग रिलेटेड जो फंडा में पहिले एटा इंडिया रा 13टा सेक्टर पे लागू होछि डिफरेंट सेक्टर्स ना कोन वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन इंपोर्टेंट ओके एती समझते क्लियर Yes, sir. ओके किछि अदर रिलेटेड न्यूज़ गोटे होछि कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली कोई की गोटे जगह अछि जम्मू रे तो दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट इंडिया रा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत नेक्स्ट टिपलिंग पॉइंट कोन देखो द क्लाइमेट टिपलिंग पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर a small change could push or into abrupt or irreversible change जदि ए एमटी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा हिच देयर आर 9 such points that are identified worldwide ए नोटा पॉइंट जदि किछि टिके चेंज हबो ना तार इंपैक्ट बहुत अधिक पड़िबो ग्लोबली दैट आर कॉल्ड द टिपलिंग पॉइंट्स तो नोट एमटी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा हिच को नोटा पॉइंट लेट अस सी फर्स्ट होची अमेज़न फॉरेस्ट सेकंड इज द आर्टिक let's see this first is the Amazon forest this is your Amazon forest next is your Arctic sea ice ta koti achi this is your Arctic sea ice here third is the Atlantic circulations Atlantic ocean ra 3 number this is your Atlantic circulations boreal forest achi North America here it is your boreal forest next is the coral reef achi ग्रेट बैरियर रीफ जो हमें कहूछु ऑस्ट्रेलिया रो दैट इज द कोरल रीफ ग्रीनलैंड आइस शीट ग्रीनलैंड रे ग्रीनलैंड हमको जोना कोटे अछि ग्रीनलैंड रो आइस शीट नेक्स्ट इज अ परमाफ्रॉस्ट रशियन माने जो हमर साइबेरिया वगैरह एरिया जो रहला दैट इज योर परमाफ्रॉस्ट नेक्स्ट वन इज द वेस्ट अटलांटिक आइस शीट माने अटलांटिक को सॉरी अंटार्कटिका को जदि हम डिवाइड करिया गोटे वेस्टर्न पार्ट आसीबो गोटे ईस्टर्न पार्ट आसीबो so western part एटा कहूचे वेस्ट अटलांटिक आइस शीट आउ विल्कीज बेसिन जोटा कि ईस्टर्न साइड আছে this is number 9 so these are the 9 points you keep in your mind possible जदि हबो तो एतोले मेंस लिखबे मेंस रे भी इंटीग्रेट करबा को चेष्टा करंतु then it will fetch you good marks okay green washing
यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस आसी सारी ग्रीन वॉशिंग रिलेटेड. व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? जते बडे हमें कौन सी गोटे कंपनी जदि गोटे कंपनी को सपोज गोटे रिलायंस गोटे कंपनी अछि, ओके, से कंपनी ऊपर किछि ऑब्लिगेशंस दिया हला, व्हाट यू शुड डू, यू शुड act so that your emissions or the climate friendly productions hava darte. What they are doing, they are coming up with such practices. It seems to be green, but it is not green actually. It is just a eye wash. Okay, दिखावा करिया पे जदि कोनोसी प्रकार इनिशिएटिव गोटे कंपनी बा गोटे कंट्री गोटे रीजन जे भी नौ छथि, it is called green washing. Okay, that is written here. These are the practice of misleading general public into believing that the company or the sovereign or the civic administrations are doing more for the environment that they are actually माने से माने जो actually जो करछंती ताकू अधिक करछंती माने perceive हुए, but it is not actually happening. Okay, ता अंडर कोन जाउछन से जेंति फिबलिंग करंती, प्रूफ्स न थाए, से मानको हिडन ऑफ ट्रेड हुए, से मानको irrelevance किछि थाए, लेस इविल गोटे ना दियंती, माने हम जो कोन लेस हार्मफुल. व्हाट इज लेस हार्मफुल? हार्मफुल नॉट हार्मफुल, दैट्स ऑल. लेस हार्मफुल रथबो. नेक्स्ट होची वेगनेस, हमको बहुत गुडे जिंस रे रखिता. These are more important for you. Just keep this thing in mind कि जतोले आपण मेंस राइटिंग रे सिमिलर टाइप रो कुछ क्वेश्चंस एनकाउंटर करिवे, then you should return back over here. You should take a glance at representations, diagrammatic views. Why I am telling PT पढंतु एथि पे जो diagrammatic representation ना you will see over here. एमती ही आपण को एग्जाम रे लिखबार अछि. एई से मुंडा थ्योरी लिखले कोन से मार्क आसीबन. ओके, नेक्स्ट इज द किलिंग ऑफ. किलिंग ऑफ कोन? एटा गोटे ऑब्जर्वेटरी अछि हवाई रे, दैट इज कॉल्ड सी दिस वाज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वेटरी मोना लाव रे अछि हवाई आइलैंड रे. इट इज द एटमॉस्फेरिक सॉरी मोना लाव एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी. कहार जो गत काली कहतली जेंति नासा अछि तांकर आ गोटे बॉडी दैट इज रेस्पोंसिबल फॉर द ocean or atmospheric administrations. Okay, national ocean and atmospheric administration एटा कहार यूएस रो जेंति नासा स्पेस में देखुछ सेंति एटा तांकर ओशन और एटमॉस्फेयर को देखुछ गोटे बॉडी. तार गोटे मेजरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट करिया पई ऑब्जर्वेटरी अछि मोना लाव एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी. मोना लाव अछि गोटे जागा, गोटे कैन से वोल्केनिक आइलैंड कोटी अछि हवाई आइलैंड भीतर गोटे अछि. इट्स ए वोल्केनो यू कैन से. तो एटा होची लॉन्गेस्ट uninterrupted instrumental record of atmospheric carbon dioxide. तो continuously 1985 रो ये 1958 रो ये continuously record करची कार्बन डाइऑक्साइड रो लेवल को, that is called killing off. तो ये पर्टिकुलर पार्ट्स पर मिलियन और ये पर्टिकुलर ईयर नंबर ऑफ इयर्स. ओके, इट्स स्टार्टिंग बिफोर 1960 जो हमें पहले 1958 टू स्टार्ट करके पर्यंत कंटीन्यूअसली रिकॉर्ड करूची. किछि इंडिसेस और रिपोर्ट देखियो हमें. फर्स्ट होची ग्लोबल, जोडा मु कहि भी इंपोर्टेंट यू शुड रिमेंबर, जोडा कहि भी इंपोर्टेंट नहीं यू कैन स्किप इट. ओके, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रो स्टेट जति लागि छि ना, स्टेट ऑफ क्लाइमेट समथिंग रो स्टेट ऑफ रिपोर्ट जनरली एडा डब्ल्यूएमओ पे. ओके, जति क्वेश्चन रे इन केस मन न पडिबो देन यू कैन यूज दिस अप्रोच, बट मु कोन एडा 100% मोस्टली. ओके, तो WMO विषय देखिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1950 रे एस्टैब्लिश हेतला. इंडिया इज ए मेंबर टू दिस. हेडक्वार्टर अछि जिनेवा स्विट्जरलैंड. ओके, नेक्स्ट ए रिपोर्ट रो फाइंडिंग्स कोन थिला जे ग्लोबल स्टेट क्लाइमेट रिपोर्ट रो. तो ग्लोबल मीन सी लेवल जो अछि इट इज न्यू रिकॉर्ड को पहुंची गला 2011 माने 2021 रे, दैट इज 4.5 mm. इट इज राइजिंग पर ईयर. 2013 2021 भितरे 4.5 mm it is increasing per year. Okay. This you can skip. Second, greenhouse bulletin. Greenhouse bulletin it is by again WMO. এটা annually release होची. को गैस को से मेजर करछन तीनटा मेन ग्रीन हाउस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. ए तीनटा फर्स्ट तीनटा लेवल थिले 1 2 3 लेवल. CO2 मैक्सिमम, तापर थिला मीथेन, देन योर N2O. से तीनटा को मेजर करछ. दैट इज द ग्रीन हाउस बुलेटिन. काली हम देखथिले ना, यू मस्ट हैव रिमेंबर. हां सर. हाँ, ठीक. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट. क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन. इट अगेन वर्ल्ड बैंक रो गोटे रिपोर्ट. जस्ट हैव दैट लुक के रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करछि. नेक्स्ट जो नेशनल एनडीसी कथा कहले UNFCCC रो पेरिस पर फसछि. नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ
again state मु गोटे जिंस एक्सेप्शन कहतली इट इज द एक्सेप्शन स्टेट असला स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट से क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर सेटा गोटे एनजीओ से रिलीज करछि दैट्स ऑल नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एटा किए रिलीज करछि जमन वॉच कोई की गोटे कंपनी अछि सॉरी गोटे एनजीओ अछि नेक्स्ट देयर इज ए क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क आ गोटे होछि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ए तीनटा मिसे की रिलीज करछन्ती फर्स्ट तीनटा जो वर्तमान देइछन्ती से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो तीनटा लिस्ट अछि ना से वैकेंट छाडी माने तांको कहि हिसाब रे कोनोसी कंट्री नांते एमती स्टेप निछन हमें ताको 1 2 3 रखी ओके तापर फोर्थ नंबर रे डेनमार्क अछि इंडिया रो रिकॉर्ड इंडिया वर्तमान 8 नंबर अछि इंडिया पोजीशन डेवलप हिच तार होछि इंडिया बेटर काम कोछि क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट एटा यूनेस्को रिलीज करछि आ आईयूसीएन सहित मिसिकी तो 1/3 ऑफ द ग्लेशियर वर्ल्ड रो जते भी हेरिटेज ग्लेशियर होछि एगोडा सब डिसअपियर कर जिवो 2050 सुधा जदी हमें ठीक से एक्शन नॉन तो सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम जानि से भीतर आकु कहै सेकंड लार्जेस्ट माने ग्लेशियर इन द नॉन पोलर रीजन Last one is the finance for the climate action, scaling of investment for the climate and development. That report thila 2000 sorry COP26 or 27 ro finally missing but not that important. Okay, so with this we have completed our climate change. So हमें climate change complete कले प्रथम हमें pollutions को enter करियो. So as the delay हिजबो तो हमें टिके जेमति जीके टू डिस्कस कोथाटी करता pollutions we are going to continue from tomorrow. ठीक अछि? So yes. Whatever we have dealt with, please go through once. I mean, बहुत बड़े information पढ़ी चे. If you are not revising, whatever we have done, that will be go in vain. So we should not do like that. बुझी पहले समझते? Yes. कहाँ कौन problem है लो कोई भी. We are done with till 40, ना? Yes. 41. Yes, sir. Phylorus fimbriatus. तो ये कौन? What is this? Gecko. It's a gecko. It was found in recently Queensland. Queensland island कोठी अछि? को country में? Australia. It is in Australia. So it's a gecko. Gecko कौन? एटा गोटे टाइप रो reptile species कहते हैं. Lizard. Sorry? Lizard. हाँ lizard reptile हाँ sorry next होची दहारा an odo to the Indian knowledge system तो एटा कोई यूनियन मिनिस्ट्री रो इनिशिएटिव थिला Minister of Culture. okay तो कौन करियो इंडिया रो जो सिविलाइजेशंस अचीवमेंट्स और डिफरेंट सिविलाइजेशंस अचीवमेंट्स को हाईलाइट करिया पे तो व्हिच मिनिस्ट्री अवार्ड स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 तो ये कहा को इन्वॉल्व करिवो जेहेतु ए जो शक्ति लागिला ना जेतोले शक्ति लागिवो दैट मींस वुमेन okay so women को माने इन्वॉल्व करिवो तो women who have contributed to the various programs of the ministry through the स्वच्छ सुजल सम्मान 2023 ताको फेलिसिटेट करिया okay HUID नंबर तो HUID नंबर बटन कोठी आसीबो गोल्ड 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड था एटा लिथियम रिजर्व मेरी बता इट्स इन Iran. sir. Iran. Iran. Very good. Next is this one. Try to. What is the main containment present in the India made cough syrup? All मिर्ची से cough syrup क्या? Yes, sir. Diethylene glycol और ethylene glycol. हाँ बस डाइथिलीन और इथिलीन ग्लाइकॉल ता परसेंटेज अधिक होवा पर किडनी फेलियर माने कॉज करछि से नेक्स्ट इज वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव को स्टेट रो ए इनिशिएटिव गुडा टी देखि देबे ओपीएससी रे Gujarat. गुजरात ठीक अछि तो सेहि भितरे गोटे प्रोविजन माने तांको हाई कोर्ट कहितला सेहि जिंस रे कि तापे हेले गोटे अपीलेट अथॉरिटी रहबा दरकार तो वर्चुअल गोटे ट्रैफिक कोर्ट रहबा दरकार तापे गवर्नमेंट तांको इन्फॉर्म करतला कि सिमिलर प्रोविजंस आर ऑलरेडी अंडर वे तो हेइ छिबो रिसेंटली ओके तो जेंति वर्चुअली आपन को चालान काट दोछन तो वर्चुअली गोटे कोर्ट ही तो रहबा दरकार एटा भी तो डिफिकल्ट है सपोज आपण हाईवे रे ट्रैवल करचंती यू आर क्रॉसिंग सपोज XYZ डिस्ट्रिक्ट
हाई स्पीडिंग जो जने आपन कटि देला चलान सेमान कोन करछंती 2000 हाई स्पीडिंग पे 2000 आउ नॉन डीएल पे 5000 टोटल 7000 काट दोछन आपन भाई डीएल अछि भी हाउ यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ आपन को पुनी से पर्टिकुलर आरटीओ अथॉरिटी पाखु आसी करिया दरकार सपोज आपन एक्सवाइजेड जगह एक्सवाइजेड जगह को ट्रैवल करछंती से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर फेरी केस भी काम करिया इज टीडीएस फॉर यू ना तो जब ऑनलाइन चालान कोट होची तो ऑनलाइन एपिलेट भी हो दरकार गेटिंग माय पॉइंट इट इज द माने क्रक्स ऑफ दिस नेक्स्ट होची नशा मुक्त भारत अभियान इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस हाँ एटा जो गोटे मिशन हलो व्हिच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन दैट इज कॉल्ड मिलेट्स एसएफएससी तो एसएफएससी कौन है व्हाट इज एसएफएससी इट इज ए फार्मर्स एग्री बिजनेस तो फार्मर वेलफेयर पे फार्मर्स माने मिस्त्री गोटे कंसंट्रेट बनउछन देखो बाहुबली तो वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बो क्रश बैरियर इज इन महाराष्ट्र जो बुझी पड़छन ना माने जो रोड साइड रे गोटे देखि एंती स्टील रो गोटे बैरियर थाय देख गाड़ी वगैरह बाडे कि न पड़ुआ रोड साइड रे तो स्टील न करी बैम्बो रो करछन फर्स्ट टाइम गोटे सेकंड केते नंबर क्वेश्चन देखि जस्ट गोटे सेकंड हां सिस्टम नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहार इंडिया रो इंडिया विषय तो से 7 बिग मेजर कैट इंडिया रे को कैट्स मिलुचंती सब मिलुचंती कि इंडिया रे 7 को बिग कैट सर पांचटा मिलना हाय सर पांचटा मिलना दीटा मिलना कौन दीटा मिलु नांती गोटे मिलुनी एबे चिता मिलुची ना इंट्रोडक्शन हे गला सर इंट्रोडक्शन हला माने भी मिलिबो बोली को आजीबो की हां हां हे जो से नेटिव टू दैट लैंड न ओ इंडिया रे थिला ना एक्सटिंक्ट हे गला तो बर्तन मिलुचंती तो हे जेतला 1952 ना 51 हां हां तो एबे बर्तन आ दीटा मिलुनांती कौन दीटा मिलुनांती जोटा कि लैटिन अमेरिका रे मिलंती गोटे बड़ शूज वगैरह बहुत पिनंती तार सर से नाटा मन पड़ने सर पुमा 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 गोटे पुमा गोटे 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 मते मरछन पैंथर की मते जागुआर 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 हाँ वेरी गुड जागुआर एंड पुमा जागुआर कार अच्छी पुमा रो जूता पंचे ठीक अछि समथिंग वी हैव टू रिमेंबर लाइक दिस okay what is this naval commanders conference button recently heila being organized about co shipre विक्रांत it is vikrant okay ins vikrant recently जो aircraft carrier launch कराला ता ना कोन indigenous aircraft carrier आईएनएस विक्रांत जो recently launch करथले that is विक्रमादित्य जो लास्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर पीएम मोदी जो लॉन्च करथले it is विक्रमादित्य ना सर विक्रमादित्य तो ऑलरेडी हाँ सेटा मो रिसेंटली जो लॉन्च करी थिले मोदी इंडिजिनियस कैरियर हम टोटल तीनटा थिला विराट विक्रांत विक्रमादित्य ओके तो विराट टा होचे हमें ब्रिटिश आर्मी रो आनथिलु ब्रिटिश नेवी रो ताको रिटायर्ड कर देलु तापर विक्रमादित्य जोटा हमें रशिया रो आनछु सॉरी विक्रांत टा हमें रशिया रो आनछु आ लास्ट होचे विक्रमादित्य जोटा हमें निजे बनेलु नो सर विक्रमादित्यटा थिला आगरु एबे विक्रांता न्यू इंट्रोड्यूस होइछि जोटा इंडिजिनियसली डेवलप कराइछि आईएनएस कोचिन शिपयार्ड रे विक्रांत विक्रांत इंडिजिनियस ओके अच्छा विक्रांत हां सॉरी मु टिके कंफ्यूज है हां हां ठीक थैंक यू हां दैट इज व्हाट तो विक्रांत ता होची इंडिजिनियस डेवलप करले विक्रमादित्य टा रशिया रा हां थैंक यू ओके करेक्ट माय वर्ड विराट टा में ब्रिटेन रो आनथिले विक्रमादित्य टा में रशिया रो आनथिले और इंडिया जो निजे बनेला सेटा छी विक्रांत ठीक अछि एबे ठीक कहली ना भूल गई दिली सर हां तो एंडोर्समेंट नो हाउस गाइडलाइन एटा कहा रिलेटेड माने कि रिलीज करछ कंज्यूमर अफेयर्स माने जो मन इच्छा ब्रांडिंग कर दुचन सब स्टार्स गुडा तो से मानन को पई गाइडलाइंस अछि जिन सका एटा
फ्रिंजेक्स 23 इंडिया रो कहां से इंडिया एंड ना ही पूछी FR स्टैंड्स फॉर फ्रांस IN स्टैंड्स फॉर इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज है एटा केरला रो तिरुवनंतपुरम पाखि अब 5th एशियन इंडियन एशियन बिजनेस समिट कोठी कोलालमपुर तापर होची मेगा ट्रॉपिक 1 MT1 सैटेलाइट इंडिया कहां से मिसी करिबो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रांस तो काम होची कोन जो ट्रॉपिकल वेदर फेनोमेनन को स्टडी करिया पे तापर फाइनल फुल मून ऑफ द विंटर ताको कोन कोनती वार्म मून कोनती बिकॉज़ विंटर सरी गेले माने सॉइल सॉफ्ट हे जा और फॉर्म्स बाहर करसन सेमती मार्च रो फुल मून को मते सैप मून कोनती ठीक अछि किल वेव कोन कहार साउथ कोरिया तार करो गोटे टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल वारफेयर कोइ करिया आपण साइबर ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रसन्न केलाडी म्यूजियम केलाडी एक्सकावेशंस कोठी तरफ केलाडी एक्सकावेशंस हां रिलेटेड संगम एज जन कुचो संगम एज जो कोड विषय सर पचारथला यूपीएस संगम लिटरेचर संगम एरा गोटे ट्रेंड अछि आपण ओपीएससी रे गोटे क्वेश्चन पचरिबो ही पचरिबो because Sangam excavation जो Kaladi excavation से it is one of the माने important things because see Indus Valley को हमें तो एते दोउछु but कथा होची कोन Indus Valley रो बहुत गुडे पार्ट इंडिया रे नाही बर्तन आ एटा होची completely Indian जिंस बुझि पछन so it is also one of the can say important माने important civilization था जा विषय विशेष चर्चा ही दतला तो रिसेंट ट्रेंडिंग अछि तो बहुत वर्ष पर्यंत क्वेश्चन पचरिबो सहित तो केलाडी एक्सकावेशन संगम एरा पढ़ी के पक्का जीतो नेक्स्ट हां तो एरा कोन व्हिच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर WM वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एटा जो मीडियम रेंज गोटे सरफेस टू एयर मिसाइल तो DRDO कहा से मिसी करछि भारत डायनामिक्स लिमिटेड से तो आउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया को तो which term refers to the area suited beyond 200 nautical mile from the coastal region that is called the high seas up to 200 nautical miles eta हम EEZ जाउछ exclusive economic zone yes sir on plus द्वारा हां Terran 1 which is recently seen it's world to कौन है 3D reference 3D printed rocket ठीक अछि सोटा इंपोर्टेंट मो पछ अछि एटा गोटे रिसेंटली कहितला जो नाफेड अछि मार्फेड अछि डिफरेंट कोऑपरेटिव्स जो छथि से मन को इमीडिएट परचेज करिया हां मार्केट परचेज करिया कोन रेड ओनियन माने ओनियन रो प्राइस हठात फ्लक्चुएट करिया थिबो ना तो गवर्नमेंट कोन करे निजर जो मार्केटिंग एजेंसीज अछि ताको थ्रू रे बल्क प्रोक्योरमेंट करके स्टॉक पाइल करके ताकि ब्लैक मार्केटिंग समय गवर्नमेंट रेट रे ताको बेचि परियो आको कोन बफर स्टॉक क्रिएशन बेटर प्रिवत सर पछिले से कहि दे ताको माने ताको वर्क प्रोफाइल से डिटेल अछि माने एबे ने एग्जाम सर लेके पछिले जोटा इंपोर्टेंट लागु नै कि मते कि इंपोर्टेंट लागु हां एटा से सोसा चाइनीस ए कोन है इट्स अ डॉल्फिन ओके तो डॉल्फिन को हमें इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन भी कहूँ चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन्स मते कहते जनरली ईस्टर्न इंडिया और पैसिफिक ओशन से देखा जाए निसार मिशन इसरो कहाँ से मिसी करछे नासा इसरो नासा जी निसार है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में लॉन्च करेंगे एटा कौन The Prevention of Money Laundering Act was recently expanded to include which product? virtual digital asset Virtual digital assets. Okay, that's all. Okay. So, बाकी हमें next class से करिवा. तो रिवाइज करिवा और नेक्स्ट जो भी टारगेट रहला जो 60 80 पढ़ती थी ठीक अछि जदि हमें सपोज 10 15 कम भी कवर कोचे नो इश्यूज वी आर कवरिंग ना दैट इज गुड
ସାର୍ ଏମିତି वन लाइनर डिस्कशन କରିବେ ନା ସାର୍ ଏମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକାଲ क्वेश्चन ବି डिस्कशन କରିବେ କରେଣ୍ଟ କୋ- अफेयर ର କୋଉଟା କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି।